Now students, remaining questions are going to be very interesting. Before we solve the questions, I want to give you an important information. This information is related to your first test, okay? And hopefully these tests are going to be conducted in this month, maybe in the next week. But I want to tell you the syllabus. So syllabus of your first test, okay? You can note it down in your notebook. First test syllabus is chapter 5 and 6. You have to prepare both the chapters and the test will be of 10 marks. So the questions will be from chapter 5 and 6. Chapter 5 is about multiples and factors, and chapter 6 is about understanding fractions. So we have solved these chapters. I have explained each and everything about these chapters, and I hope you have practiced also. So do practice for these chapters, chapter 5 and 6. Now keep continue. We have to solve the remaining questions of exercise 7. Okay. So we have to start with question number 7, because लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व किए थे. सो अभी हम 7 से स्टार्ट करेंगे एंड देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay, and there are 6 parts. So the first part is 1 into 3 upon 3 into 3 equals, there is no numerator but denominator is 9. So you can see that in the denominator 3 3s are 9, both the numbers are multiplied together. So in the numerator we write 1 3s are 3. Next part, in second part, this 2 upon 15 equals, no numerator is there but denominator is 15. So you can see, and if you know about the equivalent fractions, you can easily determine that 5 3 15. ओके, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर 15 बन रहा है. मीन्स अगर इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनेगा. सिमिलर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो इट विल बी 2 3 6. ओके, you can easily check that 2 3 6, that is the numerator, and 5 3 15, that is denominator. So it is second part. There are total 6 parts, so I solve fifth also. Fifth part is 14 divided by 7 upon 21 divided by 7. So the questions are very easy. Okay, in the denominator there is 3, means 21 को हम 7 से डिवाइड करें तो 3 क्वोशेंट होगा. सिमिलरली 14 को 7 से डिवाइड करें तो 2 क्वोशेंट होगा. ओके, so tables are very important students. You have to remember the tables. The questions are very easy. And I should solve one more question. Question number 6, part 6. Okay, sixth part is 12 divided by 4 upon 16 divided by 4. So it is equal to 3 upon. Numerator is given but denominator is not given. But you can see that 12 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 3 क्वोशेंट होता है. सिमिलरली 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 क्वोशेंट होगा. So this is the answer. So you have to fill in the blanks. Note it down. Question number 8 is find out 4 equivalent fractions of each of the following fractions. So we have to find equivalent fractions. और हमें 4 equivalent fractions find करने हैं. So there are 5 parts. I solve first part, that is A. The number is 2 upon 3. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 4 equivalent fractions find करने हैं. Now it's very easy. What you have to do is just multiply the numerator and denominator by the same number. तो आप 2 को
डबल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी आपको डबल करना है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। ओके, देन 4/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, बट वी हैव टू फाइंड 4। तो नेक्स्ट ये जो 2/3 है, ओरिजिनल जो फ्रैक्शन गिवन है, इसमें हम न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 6/9। ओके, देन you can multiply by 10, 2 into 10 upon 3 into 10, it becomes 20/30, and finally you can also multiply by 100, so it is 2 into 100 upon 3 into 100, now it becomes 200 upon 300, so it is quite easy, note it down. Next I solve part C. Okay, part C, it is 3/5. दिस इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। नाउ आपको दोनों वैल्यूज को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज 9/15। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट बाय विच नंबर यू मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 3/7 also and 5/7, so it is 21/35. okay, again think about other numbers. You can multiply 3/10 and 5/10. It is 30/50. And one more fraction we have to find. You can multiply 3/11 and 5/11. So it becomes 33/55. These are the 4 equivalent fractions, and I have solved part A and C. So I am going to solve one more part, that is E. Note it down. Part E is 2/7. Again we have to follow the same process. 2 को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सपोज इट इज 3 एंड 7 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देन इट इज 6/21. ओके, 6/21. Again 2 multiplied by 4, 7 also multiplied by 4, so it is 8/28. Now 2 more fractions we have to find. 2 into 5/7 into 5, it will be 10/35. And one more fraction is remaining. Let it be 2 into 1000/7 into 1000. It doesn't matter by which number you multiply. You can multiply by 10,000 or 10 lakh. So it is 2000/7000. All right, note it. So it is the time to solve question number 9. Ninth question is, give such examples in which 1/4 part obtained by distributing equally. Okay, so this information is given. 1/4 equals 2/8 equals 3/12, and we have to give such examples. Now think about the given numbers. Okay, see, the denominator is 4 times the numerator, means ये जो न्यूमरेटर है 1, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर 4 मिलेगा। सिमिलरली 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 एंड इट इज 3 4 जा 12. इट मीन्स वॉट एवर द न्यूमरेटर यू राइट, okay, there is not a problem, but you have to multiply it by 4 and it will be the denominator. So it may be 5/20. Think about other, आप कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हैं. सपोज इट इज 10, so 10 4 जा 40. Again think about a bigger number, maybe it is 25. तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100 एंड सो ऑन. तो इस तरह से इनफाइनाइट फ्रैक्शंस हो सकते हैं. ऑल दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट एंड you have to write 3 or 4 fractions, not more than 4.
because it is sufficient. So this is ninth question. It's very easy. Now move to 10th question. It is required that write any 4 equivalent fractions of 1 upon 5. Okay students, 1 upon 5. इसके हमें 4 equivalent fractions find करने हैं, and this question is similar to question number 8. So the method is multiply the numerator and denominator by the same number. It will be 2 upon 10. Okay. So 2 upon 10 is the equivalent fraction of 1 upon 5. Again, multiply both the numerator and denominator by 3. It will be 3 upon 15. Next, 1 upon 5 is original fraction. Multiply by 6. It will be 6 upon 30. And fourth equivalent fraction is, okay, सबसे पहले आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना है, दैट इज 1/5, और सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो लेट इट बी 15, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. सो इट इज 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75. ओके, these are the 4 equivalent fractions. So what is the meaning of this question? See, 2 upon 10, then 3 upon 15, 6 upon 30, and 15 upon 75. All these are the equivalent fractions of 1 upon 5. This is given in the question. तो चारों fractions 1 upon 5 के equivalent fractions हैं. Note. And the last question, okay, question number 11, because you will solve 12th question. Question is, Kumkum bought a ribbon of 6 meter length from the market. She wants to distribute it among her 4 friends. Then find how long ribbon will each of her friend get. So इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि कुमकुम ने एक रिबन परचेज किया है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स इसको रिबन को कट करना पड़ेगा 4 पीसेज में, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग हर 4 फ्रेंड्स. तो 4 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. सो राइट लेंथ ऑफ each piece equals 6 upon 4. Okay, now if you can simplify the fraction, you can do it. So both these are even numbers, you can divide it by 2. So it will be 2 3 जा and 2 2 जा 4. मीन्स 6 upon 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों इवन नंबर हैं. तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 3 जा 6. यू कैन ऑल्सो शो द डिवीजन, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4. So the answer is 3 upon 2, and it is given in meter, so it will be 3 upon 2 meter. 6 upon 4 meter, that is equal to 3 upon 2 meter. So we have solved this exercise. It is finished because there are total 12 questions. So you will solve the remaining parts which I missed, and 12th question also. If you face some problems, you can ask in the doubt section. Again I am repeating, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में आपके फर्स्ट टेस्ट होंगे. उसके लिए जो सिलेबस है वो है चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 will come in your first unit test. Okay, and for that be prepared. Best of luck.